So friends, I just because I've been repeating in my previous videos also. So please आप सब लोग अपना feedback, कोई suggestions, improvement, your view about the YouTube channel or and my website BankTekSkills.com उस पर भी कोई भी improvement है, कोई topic है, कोई suggestions है, please do give your comments. कुछ नहीं भी है और आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी अगर आप लिखेंगे तो वो मेरे लिए एक संजीवनी का काम करेगा, लाइक संजीवनी बूटी दैट मोटिवेट्स मी सो वर्क फॉर ऑल ऑफ यू राइट। एंड ये कि मेरा इंडिवियर है कि मैं आप सबके कुछ मदद कर सकूँ इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन डू इट। सो हेयर अगेन डू लाइक माई फेसबुक, मैं लिंक आपके साथ सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों लाइक करिए, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स मैं महीने में 4 लोगों को मैं 2 ड्रॉ निकालूंगा और 4 लोगों को 30% डिस्काउंट ऑफर करूंगा ऑन द कॉस्ट ऑफ द वेरियस मॉड्यूल्स ऑन माई वेबसाइट। तो और फिर उसके बाद जैसे ही आप लाइक करें या आप टैग करें मुझे तो प्लीज़ उसमें आप मुझे ज़रूर बताइए, इधर मेल लिख दीजिए BankTekSkills@gmail.com या मेरा मोबाइल नंबर है 8800441720, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैं यहाँ भी शेयर कर दूंगा इन माई लिंक। तो माई मोबाइल नंबर इज़ 8800441720 और मैं अपने उसमें डिटेल्स में भी आपको मोबाइल नंबर डाल दूंगा। तो काइंडली कंफर्म व्हाट्सएप कर दीजिए राइट, डोंट कॉल मी बिकॉज मे बी आई एम बिजी इन वेरियस अदर ट्रेनिंग सेमिनार्स ऑल्सो राइट। तो वो भी कर दीजिएगा राइट। सो वील डिस्कस वेरी इन डिटेल इज योर कंप्लीट गाइड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज़ माई वेबसाइट राइट। तो ज़रूर करिए एंड सजेशन ज़रूर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिए सो दैट you get notifications. And above all, more than 1 lakh people have seen my these YouTube videos and a lot of people have enrolled for my website. I think you'll find it very useful for this right. So let's go ahead what we'll discuss very briefly. I think बाकी ये सब जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने लाइव वीडियोस में आपके वेबसाइट पर डाले हुए हैं, तो वी कैन सी लाइव ऑल्सो एंड थोड़ा सा एक नॉलेज भी यहाँ आपको एक नोटबुक बना लीजिए, नोट करते जाइए और आप बार बार देख सकते हैं यूट्यूब को या वीडियोस या मेरी वेबसाइट पे जाकर भी आपको काफ़ी कुछ उसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे हम रिटेल KFID क्रिएट करते हैं राइट। सो फॉर क्रिएशन ऑफ रिटेल कस्टमर द यूज़र फर्स्ट हैज़ टू लॉग इन टू CRM। देखिए तो कई जगह क्या है सोल्यूशंस होगा, जैसे आप यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे, CRM आप ड्रॉप डाउन से चूज़ करेंगे एंड फिर आप चले जाएंगे फंक्शंस पे राइट। तो किफ रिटेल एज अंडर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एरो है, वहाँ किफ रिटेल है, उसके नीचे किफ कॉर्पोरेट है। तो यू वहाँ कर्सर आप ले जाएंगे, किफ रिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको ये फील्ड्स भरने हैं। ऑन एक्सपेंडिंग द किफ रिटेल फोल्डर्स फॉलोइंग सब फंक्शंस अपीयर। अब आपको जो भी करना है, जैसे ऑडिट ट्रेल जनरेट करनी है वो कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग KFID ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई एंटिटी में एडिट करना, आपने कोई एड्रेस चेंज करना, फ़ोन नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करनी है, वो एंटिटी में जाकर करेंगे, एडिट एंटिटी में। एंटिटी क्यू इज़ फॉर वेरिफिकेशंस ओनली, जो वेरीफाइंग करने वाले लोग हैं या मेकर की ट्रे में से वो वेरीफायर के ट्रे में नहीं गया। तो कई बार क्या होता है, हम एंटिटी क्यू में जाके भी हम देखते हैं कि भाई वो ट्रे में ही मेकर की ट्रे में है या वेरीफायर की ट्रे में है। कई बार क्या होता है वेरीफायर की ट्रे में नहीं दिखाता, तो कहीं प्रोसेस में कोई एरर हो गई तो इट मे बी देयर इन दैट। और नया हम KFID क्रिएट करते हैं रिटेल KFID, तो हम न्यू एंटिटी पे जाकर क्लिक करते हैं। ऑपरेशंस जहां हमने सस्पेंड अनसस्पेंड करना हो किफ को वो है। एंड रिलेशनशिप मैनेजर मेंटेनेंस, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट करते हैं और कस्टमर्स आर मैप टू दीज रिलेशनशिप मैनेजर्स। हम अलॉट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और उसको हम कमती बढ़ती भी कर सकते हैं। 50% ऑफ टोटल डेटा, 100% ऑफ टोटल डेटा, 80% ऑफ टोटल डेटा, जो भी हमने बैंक ने जो हमें करवाया है राइट। सो हेयर यू कैन सी किफ रिटेल, ऑडिट ट्रेल, एडिट एंटिटी, एंटिटी क्यू, न्यू एंटिटी। हेयर लेफ्ट हैंड साइड जो हमने पिछले स्लाइड में देखे वो सारे यहाँ ये दिखा रहा है राइट। ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप मैनेजर मैनेजमेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करके दिया था राइट।
देन न्यू एंटिटी, हम नया रिटेल बना रहे हैं तो क्लिक ऑन दिस न्यू एंटिटी। तो ये स्क्रीन आपकी खुलेगी फॉर क्रिएटिंग अ कस्टमर फोल्डर, कस्टमर इज टू बी सिलेक्टेड एज अंडर। ठीक है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो जेंडर है जो रेड एस्ट्रिक से मार्क्ड, रेड स्टार से मार्क्ड, मैंडेटरी है। टाइटल है मिस्टर है, मिस है, मिसेज है। माइनर है, मास्टर है, राइट। तो फर्स्ट इज जनरल डिटेल्स। जनरल डिटेल्स में वी ऐड बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी। प्लीज़ नोट करते जाइए, ये जो टैब्स हैं जब आप प्रैक्टिकली करेंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू, और मेरे लाइव वीडियोस देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जनरल डिटेल्स में देर आर सब जनरल डिटेल्स। वन इज बेसिक इन्फो, उसका नाम, एड्रेस, राइट। माइनर है कि नहीं है, एनआरआई है कि नहीं है, राइट। प्राइमरी सोल आईडी ब्रांच की कहाँ अकाउंट खोल रहा है, बैक ऑफिस है, किस ब्रांच से रिलेटेड कस्टमर है, वो बेसिक इन्फो में आता है, राइट। सेगमेंट क्या है, सब सेगमेंट क्या है, राइट। और हेल्थ कोड क्या है, दिस इज इन केस ऑफ लोन्स, तो जनरली दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लोन्स ओनली, राइट। देन जनरल डिटेल्स के बाद डेमोग्राफिक डिटेल्स, देन साइकोग्राफिक डिटेल्स एंड अदर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो 4 डिफरेंट हेड्स है। जनरली हम लोग जो है जनरल डिटेल्स एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स ही करते हैं, नॉट मोर देन दैट। सो यू कैन सी जनरल डिटेल्स, वी एंटर्ड बेसिक इन्फो, CRM, KIF ID, KYC documents, contact, phone number, mobile number, email ID. Then we have this demographic, right? So currency details also INR, that will be INR by default. We have to do that, right? So this is all there. Primary relationship manager की ID जो भी है we'll add it in the general details only. किसको ये account allot किया गया, KIF ID ये किसको allot की गई है। Preferential native language is Infang, that is English Infosys. Infang means Infosys English, Infang, right? Then native language code, Infang again. So all these will be there. I'll be showing you in my live videos on my website. Then basic information में general details, cust ID will be filled, only KIF ID is to be manually entered. Personal details, gender of the customer, male, female and transgender. E-banking details, relationship manager details, language preference details, access control details. Then you have this, right? Then contact details aa gaya. Then preference address type, it has to be registered in case of corporate ID. Here you can write whatever is there. Mailing address, you will choose mailing address, right, of the drop down for the preferred address type. Then add address details. एक बीच में there will be a window opening wherein you will be entering all the, तो उसमें आप एक फिक्स फॉर्मेट चूज कर सकते हैं या फ्री टेक्स्ट चूज कर सकते हैं। दैट इज अगेन अगेन वो लाइव वीडियो में आपको मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, राइट। तो यू गेट दिस विंडो इन बिटवीन, ठीक है ना। इसमें हेयर एड्रेस टाइप मेलिंग, तो जो भी रेड स्टार मार्क्ड है मैंडेटरी है। हाउस नंबर, एड्रेस फॉर्मूला, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, स्टेट, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड मैंडेटरी है। स्टार्ट डेट, कब से रिलेशनशिप शुरू हुई, दैट इज ऑल्सो हियर, राइट। Then you save this information. Contact में we have these 3 details. First is address, second is phone, and third is email ID. One by one we'll be adding these details here. Then address subtab, which can be either the mailing, work and home. Generally we choose mailing. A future address can also be noted. Address format could be either structured or free format. Structured means it is structured, we cannot add any line further what is given in the free format. Generally we use structured format, or but otherwise you can also use free format, means you can write address as you like. On providing the address details, the data has to be saved in the system. Phone and email numbers, email IDs have to be saved in the system, right. So here you can see phone and emails, the communication phone, right. तो होम फोन है, तो जनरली वी यूज़ कम्युनिकेशन फ़ोन. प्रेफर्ड ईमेल टाइप, you can choose here accordingly and enter the email ID and then save it, right. So phone number could be cell number, registered phone number, telex, work, home, any other communication. Phone number cannot exceed 22 characters. Generally it is mobile number plus 91 as country code.
Then email address could be communication. Generally we choose communication. Home, palm, registered work. So we can add it here. Then general details tab. Then we go into identification documents details. KYC documents. हमने क्या लिए हैं? Voter I card, PAN number, Aadhaar, whatever you have taken. The document type drop down. You'll choose from that. Voter I card, passport, PAN number, whatever you have taken. Then document code. Automatically अगर आपने जो भी चुना है, let's say anything, तो वो कोड ऑटोमेटिकली यहाँ शो करेगा. यूनिक आईडी, वट एवर इज द यूनिक आईडी ऑफ द केवाईसी डॉक्यूमेंट गिवन टू अस. Then scan, we can scan the KYC documents. If it is available in your bank, you can choose yes, and scanner should be attached, whosoever is doing it, or any other person can also scan them, right? So scanner should be attached with your laptop. Place of issue, कहाँ वो वोटर आई कार्ड इशू किया गया. If what is the issue date, if expiry is there, so like passport has an expiry, driving license has an expiry, we have to write the expiry date. Otherwise voter I card, no expiry is required. Is document verified? Yes. OSB, original seen and verified, right? And save it. The currencies, INR. Currencies in which customer can open accounts and transactions are to be defined under sub-tabs. Unless currency is defined customer level, accounts cannot be subsequently for the customer in the specified currency, right? So currency has to be specified in a customer level, not the account level, right? The debit and credit discount preferences to interest preferences to be given to the customer. Expiry dates of such preferences is mandatory. In case any, so generally it is not allowed. Don't have to tinker. Expiration date for such preferences is mandatory. In case of withholding tax, withholding tax कौन देता है? NRI. That has to be mentioned in case the account holder is NRI. Otherwise, it is zero for resident Indians. So currency details INR. You can see on the screen. Credit discount 0, withholding tax percentage 0, preferred expiry date 22 January 2099. By default वो date आती है 99 की. And withholding tax because वो resident है, NRI नहीं है. Otherwise NRA का जब अकाउंट खोलेंगे automatically it will be showing the interest that 31.1.2% has to be charged on any interest paid to NRI in case of NRO accounts, non-resident ordinary accounts. Then core interface, again this is not done right. Preferential code, this is not to be tinkered, right? Household, the creation of household KIF ID name to which accounts of the customers are to be identified with is done under the tab identify. Initially the household name is created using create and link household tab. So ID is created, identity, the household name is created using create and link household. Subsequent account to be linked, user link household tab. The family members accounts can be added through household KIF ID. So here you can see, right, create household, householder's name, whosoever it is, maybe he is the eldest male member, and who is the global relationship manager. Then household name, whatever is there, right, is assigned here. Share household, save household, sorry. Then we go on to demographic details. So in demographic, whatever fields are marked with red star or red asterisk are mandatory, like nationality Indian, marital status married, unmarried, or whatever it is, drop down so you can choose it. And if it is NRI, तो which country does he belong to? Baki fields, if you want to fill caste and all that, it is all up to you as per the bank guidelines. अगर हमने भरनी है तो ठीक है, अदरवाइज जनरली वी अवॉइड दिस. Alternate channels, ATM branches, direct sales agent, whatever is available on any access channels. So we can link up here itself, right? Then we have this qualifications. So again, अगर qualifications अकाउंट फॉर्म में is post graduate, institute कौन सा है, तो this is just for information sake. We can write that if he is a graduate, post graduate, or metric, or whatever it is, we can write here. Then employment status. Employment status, if he is self-employed, salaried, or earning businessman, drop down so we can choose that, right? Occupation,
engineering consultant, whatever it is, drop down, all the list is available. So these two fields are mandatory in employees status. Otherwise, you can write employer ID वगैरह, तो generally I don't think we have employer ID. So only these two fields are to be filled up here. Then income and expenditure, those we are opening for, what is his income, what is his expenses, right? So employment type, if he is a salaried or if he is businessman, how much is he earning, how much is he making expenditure. Gross income, this is mandatory. What is his per annum income, that has to be given, otherwise system जो है आपको error देगा. तो employment type in case of income and expenses details, and gross income has to be given here. KIF retail new entity psychographic details. Now psychographic details we give where various heads under which psychographic information is obtained are individual profile of or preferences details like segmentation relationship details, CIBIL, what is the score, product and credit bureau preferences, transaction plan, asset, does he have any assets, individual profile or preferences details we can add up here. So this is for psychographic, right? So we can also add hobbies, music, sports, travel, or shopping, entertainment, right? Small business. So whatever his hobbies are, we can write it up here for further references again. Preferred locale, so which area does he belong to? Customer preferences, valid till, कोई ऐड करना आप चाहते हैं तो you can add that. अदरवाइज कोई भी 202099 डेट डाल दीजिए, 31 दिसंबर 2099, वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगी, राइट. Then we have again psychographic, same screen is shown here. Then we have this life cycle stage. What is the stage? Is he young? Is he old? Is he middle aged? Right. So this is again for customer profile only. How to target customers basis the sales. Right. Then psychographic introducer, guarantor, references, beneficial owner, if he is the one. In case of partnership, if he is the partner, or director in case of company's account. So beneficially owner means you have to have 25% shareholding in companies and 15% in case of partnership. So a lot of fields are available, but it's not necessarily we have to fill all these fields. You can keep on adding relationships, guarantor details, references. We obtain two references. Yeah, beneficiary owner details, introducer. We can add his details here, right? Then we have this how to add this asset. We have this also asset है, कोई मकान है, कोई दुकान है, and it is via car है, it is hypothecated to mode or type, lifestyle, purchase date, फाइनेंसिंग मोड. तो कोई एसेट कोई लोन लिया तो वो डिटेल्स हम यहाँ एसेट डिटेल्स में हम डाल सकते हैं, राइट. Life cycle details, right? So whatever is there, we can add lifestyle details, we can remove our lifestyle details, right? All these fields are available here. Preferred product details, product interest type, drop down, so you can choose product ID. If there is any variant of any product, we can choose from here. Baki scheme code, when we'll open the account, we'll choose the scheme code. Automatically, those details will be populated in the system automatically, right? KIF ID, new entity, customer, other banks, and credit card details. If he's having other banks' credit card, so anything is there, we can enter that also. Card, Mastercard है, Visa है, Amex है, right? क्या बैंक नेम, किस बैंक का, क्रेडिट कार्ड नंबर. तो अगेन दिस इज फॉर रेफरेंसेस ओनली, राइट. Then after submitting this, we have this. When we submit, we get this window here, right? The KIF customer approved, right? Auto approved, or KIF customer approval, KIF customer approval D1, whatever it is. Save process selection. Click on this. You can see here save selection process here. And this KIF ID is created. You can see here save process selection. Click here.
cursor से, it will get you to the another hyperlink wherein submit and QFID would be created. That has to be noted down and further verified by the verifying officer. So that's all for this QFID, retail QFID. I have explained very much in details. To learn these also, and then you can watch my live videos on my bank sites again. So again, I repeat always all at the beginning, at the end of the my this video, that do subscribe, press the bell icon, give me your suggestions. कोई नहीं है तो राइट सर, इट्स फाइन, इट्स ओके, प्लीज डू गिव मी योर फीडबैक, कोई सजेशंस, इम्प्रूवमेंट. And also like my Facebook, tag my Facebook account with yourself, or and Instagram also, and confirm me, sir, I've liked both the Facebook and Instagram. So in a month I'll be offering 4 lucky draws as a 30% discount to people. I'll be doing it, and trust me, it will be transparent, and we'll offer these benefits. This is just to give you a mix of studies as well as some adventure or some expectations or something like that, right? So hope this was great. Please, I'm waiting for your feedbacks, and whatever I've told you, please ज़रूर करिए, connect with me. The more energy you give me, the more I'll deliver to you. This is my assurance to you. Energy means your comments, your likings, your suggestions, your improvement, any topic additions, anything. So I'll be wiser by your suggestions. Thank you.